Yes. Now keep reading. Potential energy. Potential energy. We represent potential energy as U. U. Okay. Tell me what is potential energy according to you? Potential energy means mgh. ah, that you are talking only gravitational potential energy. That is one of the type of potential energy. So potential energy is not only mgh. It can be spring potential energy also, some other potential energy also. But आपको what is potential energy? Anything? कुछ मालूम है? Potential energy. So actually in physics में perfect potential energy is not defined. Potential energy is not defined. Always change in potential energy is defined. Very important. Always change in potential energy. Don't use potential energy. But after getting the change in potential energy, एक certain assumption करके we are trying to find potential energy. But actually, in every time, a change in potential energy is defined. Okay, always. So what is the definition says? Change in potential energy, delta U is equal to लिखो in physics में potential energy is not defined. Change in potential energy is defined. And the change in potential energy का formula है UF minus UI, final potential energy minus initial potential energy is equal to negative of work done by conservative force. In order to bring the particle from initial to final. This is the definition for change in potential energy. Negative of work done by conservative force. You know conservative force, three forces, right? Spring force, electrostatic force, and gravitational force. These are the three forces. We can use negative of work done by conservative force किया तो change in potential energy आएगा. And this is always everywhere we can apply this concept का. Majorly, mostly potential energy questions में they'll ask work done, work done, work done पूछेगा. Work done we are find by using change in potential energy concept. One more definition is there. One more definition is there. Change in potential energy, which is equal to U final minus U initial is equal to plus work done by external agent, external force. Okay, work done by external force in order to take the particle from initial to final position. This is the work done by external force. मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं, that will be exactly opposite direction to that of conservative force. So plus आएगा. Okay, and this definition will be true only when work done by non-conservative force is zero. मतलब there is no friction. At that time we can apply this one. And change in kinetic energy is zero. Because some kinetic energy उसमें गए तो we cannot find the potential energy, right? So changing kinetic energy मतलब very slowly लेके जा रहे हैं ऐसा. Okay. So we can use work done by whenever you asking work done by external force, check करो friction तो आपको साफ साफ दिखाएगा. If they not mention anything also, you can use this formula by putting delta. We are assuming k is zero. बोल के we are assuming delta k is zero. Okay. So in the So first one, what did W constant force? नहीं conservative force. Oh, Conservative force. Negative of work done by conservative force. This is the definition. In order to take the particle from initial to final. ओके मतलब इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन में मतलब आपको वर्क डन फाइंड करने के लिए बोल तो क्या करेंगे सिंपली यू ट्राई टू फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड माइनस यू सेंड दिस साइड यू विल गेट द वर्क डन बाय दैट mg or something, right? बैड करो डेफिनेशन. Sir, in the second definition. सेकंड डेफिनेशन क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ऑर्डर टू टेक द पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. प्लस एक्सटर्नल फोर्स मींस हम लोग जो काम कर रहे हैं which is exactly opposite direction to that of negative of work done by conservative force. Plus रहेगा that's why. Okay. And this condition is true. Definition is true only when non-conservative force का work done is zero and changing kinetic energy is zero. ये दोनों So condition if satisfy change हुआ in तो kinetic energy is zero, then wouldn't work done by external forces also be zero? नहीं ऐसा नहीं. एक ही फोर्स नहीं होगा ना. इफ यू अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम आपको बहुत सारे फोर्सेस होगा. ओके सो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एजम्पशन करके भाई देखो यू टेल मी सम काइनेटिक एनर्जी इज देयर then this definition does not hold. Why? Some work is done to change the kinetic energy also, right?
सो उसमें चले जाएगा, जो आंसर आएगा वो रॉन्ग हो जाएगा. दैट्स व्हाई whenever we are calculating this, we are using this definition, we are assuming there is no changing kinetic energy. मतलब जो भी वर्क कर रहे हैं is not converted to kinetic energy. ओके आ गया, बैठ कर दिया. टेल मी, मानो बोलो फर्स्ट डेफिनेशन बोलो. Sir, change the potential energy is not defined. The change in potential energy is equals to final potential energy minus initial potential energy, that is equals to negative of work done by conservative force. Yeah. एंड ईवर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. ओके चलो चलो न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन दिस. पोटेंशियल एनर्जी का अभी तक कुछ फॉर्मूला नहीं है मालूम, बट आपको ये वर्क डन पूछेगा, यू कैन यूज. ओके, if the conservative force is given by F equal to 2x I cap, the given F is equal to 2x I cap plus 3y square j cap. This is a force given, conservative force. It can be anything, conservative force दे दिया. Find the initial potential energy. Find the initial potential energy at 3,4 if the final potential energy at 2,1 is 8 joules. Okay, that means here initial position, final position is there. Initial coordinates are how much? 3,4 and final position is 2,1 and its potential energy final is given as how much? 8 joules. He's telling to find initial potential energy is how much in order to take the particle from A to B. So sir, we just find work done by that force हाँ, and then yes. here is UF and U. खत्म, सॉल्व करो जाए. बिकॉज इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, दे दिया वो कंजर्वेटिव फोर्स बोल के, खत्म. So what is the formula? UB minus UA is equal to negative of work done by conservative force in order to take the particle from A to B. And since force is a variable force, use the integration concept. So for initial potential energy, we just need to keep from like sir, do we need to keep, what should we keep the limits as? मालूम है, इनिशियल से फाइनल 3 to 2 is x, 4 Sir, to I 1 got is y. minus 60. UA फाइंड करो, इनिशियल पोटेंशियल फाइंड करो. What done wrong है? What done how much you got? So minus 68. Minus 68, correct. Very good. On the way and do. Sir, minus 60. Minus 60 just perfect. Sir, I got the work done as minus 88. No, minus 68 आएगा. Then if you see, if you bring this side, तो कितना होगा? A minus है ना? UA minus 68 you got it, but done. So 8 minus G. Now bring this side, कितना होगा? Minus UA is equal to minus 68 plus 8. Minus 8, right? Minus 8. So कितना? Minus 76 आ रहा है? ये ओके, नेगेटिव ऑफ वर्क डन में प्लस 68 आएगा, माइनस 68 नहीं, वर्क डन इज प्लस 68 आएगा, राइट? बिकॉज नेगेटिव ऑफ वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? देन आप उधर भेजो, क्या होगा? इट इज सो माइनस यूए इज इक्वल टू 60 joules एंड यूए इज इक्वल टू माइनस 60 joules. मानो आया? Yeah. सो वर्क डन इज, आपको क्या करने का? सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल करने का, राइट? एफ डॉट minus 60. Yeah. हाँ, तो आने के बाद माइनस लगाओ, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको देखो क्वेश्चंस में नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कंफ्यूज होगा. अब व्हेन यू सी द सॉल्यूशन आल्सो, अरे व्हेन समटाइम्स नेगेटिव लगा रहे हैं, वन टाइम पॉजिटिव लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, मींस एक्सटर्नल एजेंट का पूछ रहे हैं और कंजर्वेटिव वर्क डन का पूछ रहे हैं. वी हैव टू सी, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू पुट. ओके चलो, ये करो, पेशेंस से करो, आ जाएगा. A particle moves in a loop A, B, C, D. A conservative force acting on it. They only mention conservative force acting. Work done by the force along the various section are given to you. Work done from A to B, they given as minus 50 joules. And work done from B to C as 25 joules. Work done from C to D is 60 joules.
Assume the potential energy of the particles is 0 at A. A में potential energy at A is 0. Write the potential energy I want at B and D. I want potential energy at B and D. So, sir, will the final potential energy at B be equal to initial potential energy for UBC? हाँ equate करो. Total work done same definition use करो for these 2 points and try to find. So पहले work done you tell me conservative force, right? Conservative force में closed path में work done is how much? Closed path में work done is how much? If the conservative force 0. Zero. Now equate all the work done. You will get the work done from DA आ जाएगा first. DA आ जाएगा work done. Because all No, of sir, you right? I have a doubt. Tell So, me. from A to B, they said हाँ. minus 50, right? हाँ. Oh, no, I understand. मतलब UB minus UA ऐसा. Sir, work from A to B, will it be UB minus UA or UA minus UB? Particle is going from A to B या B to A ना? A to B. हमारे So final we- means UB minus Oh. UA. So W from DA will be minus 35. Minus 35 joules, yes. Work done in a closed path is 0, right? So AB plus BC plus CD plus work done into E2A is equal to 0. So if you substitute minus 50 plus 25 plus 60. So 25 minus 25. If you substitute 35. So work done from D to A is minus 35 joules. So minus 35 and 50. Minus 35 and 50. Yes, correct. 50. Yeah, correct. कितना है प्रणव? Sir, but Yeah. what's the point of using the formula of total work is 0? See, आपको पोटेंशियल जी एक ऐसा है कि टेल में यूज द डेफिनेशन ओनली भाई. वर्क डन बाय चेंज इन पोटेंशियल कितना है फर्स्ट? UB minus Sir, UV, right? first I found Sir, we already B. gave CD. So Oh, first you no. find B, then you find C, then you find D. Okay, Sir, B that's का कैसा right. आएगा टेल में? So they gave work of A to B is minus 50. खत्म. यूज करो. पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है? UB minus UA is equal to negative of work done by conservative force you have taken from A to B. So Yes, UB sir. you want to, UA is 0, A 0 ले लो. So therefore UB is equal to minus of work done for A to B is how much? 50. Minus of minus 50 is 50 joules. ये आ गया, UB आ गया. Now D के लिए आपको यूज करने का A minus D, right? देन वर्क डन का ये यूज करेंगे, minus 35 यूज कर सकते हैं. Oh, sir. got it. Yeah, sir, but Fine, sir, fine. even that will be minus 35 then. No, minus 35. One Because is UA is 0, right? UB is minus 35 is correct. Minus 35 joules is answer. Definition always important है. Change in potential energy is equal to negative of work done by conservative force. ये हमेशा even gravitation में भी potential energy में ये deal करूंगा. Even electrostatics में deal करने वाला, electric potential capacitance में deal करेंगे. बहुत सारे chapters में same definition है. No, sir, it will be plus 35, right? No, minus 35. No, sir, because UD will Yes, be plus 35. minus of Plus minus, 35. right? Yeah, plus 35. No. 35 minus 35 आ रहा है ना? Minus 35. Minus 35. देखो, No, it will be plus, right? change in Because- the particle is going like this, right? देखो, UA minus UD is equal to negative of work done by conservative force in order to take from D to A. No, sir, So D- wouldn't. Oh. This is C to D, D to A. How much you got? D to A is minus 35, right? So UA is how much? 0. Minus UD is equal to minus of minus 35. So कितना होगा? UD is equal to 35. उधर गए तो minus 35. Yes, sir, minus got it. 35 is answer. चलो. Now types of potential energy. We have two types of potential energy. बोलो, what are the different types? One is conservative force का only potential energy is different, right? One before he told it, Pranav, MGH बोल के, that is called as gravitational potential energy.
whenever people says ask what is the formula for gravitational potential energy, that time mgh. Spring potential energy का formula अलग है. So एक एक का एक एक है. Okay, so there are two types. One is gravitational potential energy, other one is spring potential energy. ये दोनों डील किया तो पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक डन हो जाएगा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिटेल में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ने वाला है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, but little formula we learn gravitational potential energy. What is the formula? Whenever this is earth, I am taking the object from here to एक height h, एक particle को of mass m. Tell me what is the potential energy? Actually, here also change in potential energy different, always change in potential energy. But we assumed here on the earth surface में potential energy is zero. ग्राउंड में पोटेंशियल एनर्जी जीरो अज्यूम करके देन वी गॉट पोटेंशियल एनर्जी एज फॉर्मूला क्या है mgh. And this formula will be true only when h is much less than r, radius of the earth. R is a radius of the earth. अगर मतलब दैट्स वाई mgh हम लोग जो भी हम लोग 9th क्लास में टीच किया ना, mgh क्यों लगाया, बॉल को थ्रो कर रहे हैं वगैरह में, रेडियस ऑफ अर्थ से कंपैरिजन में वेरी लो डिस्टेंस है. एट दैट टाइम we use mgh formula. Okay, if r का approximately r का है तो greater है तो we'll use some other formula which will deal in the gravitation chapter में. Okay, mgh is the formula. Okay, now questions करेंगे, understand the questions and solve. So formula gravitational potential energy का base में questions करेंगे, that is mgh is a formula. चलो हाँ करो. A pendulum initially at rest Can you go in a back for a second? backward, huh? Sir, in this there's only one formula. Only one formula. Gravitational potential is mgh. So what is Then, that h greater than r? Like h is less than, much less than r. R is the radius of earth. Radius of earth. Then only you will use this formula. So got it. Very low ball throw किया कुछ हो गया, बहुत less है radius of the earth से, that's why mgh. Okay, numericals करो. A pendulum initially at rest in a vertical position. The bob is pulled towards right. I pulled the bob towards right. Find the change in gravitational potential energy of the pendulum bob of mass m as a function of x. I want change in potential energy delta u चाहिए in function of x. Is how much in terms of x. X is the distance from here to here, and length is the original length, right? L is the total length of the pendulum. मतलब आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस आपको सिंपली फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करने का, राइट? ओके, so that time what will be the formula you'll use? So L will change, it will become L and L minus L cos theta. This is a ground reference, right? We are taking the reference. See, always पोटेंशियल एनर्जी में एक रेफरेंस लेंगे, उसके रेस्पेक्ट में कितना हाइट में गया देखने वाले है. अगर बिलो गया तो माइनस डालना पड़ेगा, ऊपर गया तो प्लस डालना पड़ेगा. ओके, दिस इज अ रेफरेंस. फ्रॉम दिस इनिशियल पोजीशन ऐसा था, फाइनली कितना हाइट में गया, दैट वन यू हैव टू फाइंड. देन ओनली वी कैन फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या होगा? mg डेल्टा h. यू कैन यूज दिस वन. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, ये डेल्टा h कितना, हाइट कितना? सर L minus L cos theta. हाँ, गुड. देखो इसका कंपोनेंट क्या होगा? L cos theta and total is L, so this will be L minus L cos theta. So mg into L कॉमन लिया तो mgl into 1 minus cos theta. समझ में? mgl into 1 minus cos theta is a change in potential energy. अगर वो in terms of x में पूछा, we can take the right angle triangle help. cos theta क्या होगा? cos theta is adjacent by, इस ट्रायंगल में बोलो हाइपोटेनस कौन सा? So hypotenuse is L. हाँ, हाइपोटेनस L. adjacent is For adjacent is L cos theta. हाँ, so इक्वेट कर सकते हैं चाहे तो, in terms of x में आएगा. ओके, so cos theta इसका कितना होगा?
क्या करेंगे इन दिस में? ट्राई करो, सब करो cos थीटा की जगह में. Yeah, sir, substitute will get some. 1 second. इन टर्म्स ऑफ x में करो. देखो l cos मत डाल लो, l cos डोंट टेक. सो व्हाट यू टेक इज, देखो So won't uh, cos theta be L cos theta by L? नहीं नहीं, Just देखो ऐसा नहीं है. देखो ये हाइपोटेनस है, ये वाला अपोजिट, ये वाला कितना होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन लाइक दिस इंस्टेड ऑफ एल cos थीटा, राइट? नाउ टेल मी cos थीटा की जगह में क्या डालेंगे? एम जी एल इंटू 1 माइनस cos थीटा की जगह में एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, राइट? अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय हाइपोटेनस इज एल. खत्म. वी गॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स, चेंज पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ एल. ओके आया? सो एल cos थीटा मत ले लो, एक्स में चाहिए ना, एल एक्स में चाहिए ना, सो अगेन अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज आंसर. गॉट प्रणव? oh yeah, sir, got it. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या करो? ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम, एक रॉड है, मास एम है, यूनिफॉर्म रॉड है, पूरा रॉड है, लेंथ एल इज वर्टिकली अपराइट, ऊपर ऐसा है, horizontal on the horizontal surface. Okay, assuming zero potential on the base of the rod, here potential energy is zero. Always ground में we assume potential energy is zero. Determine the potential energy of the rod. Complete potential energy of the rod चाहिए. करो देखते हैं. Wait. So won't it be MGL only? mg why? They gave height and they gave a mass into G. हाँ, see understand, इधर very important potential energy का concept समझो. देखो if I take a small piece of this mass, ये height, ये suppose मान लो h1 height है. Suppose if I take a small piece of, ये height different है, h2 height है. ये Yeah. height मतलब ये mass किधर है? Where? Oh. हाँ. So each particle का mass is changing with respect to height. Sir, Position is changing. sir, we can take it anywhere, right? Anywhere कैसे लेगा? मतलब this So, क्या the L you're total taking rod should का be mass equal to same. height. हाँ? The L which you're taking the mass from should be equal to height. L is total length. हाँ. Height कौन सा height लेगा? Mass, total mass किधर है? So can't you do L minus H1? अरे here so many heights are there. देखो इस particle mass है h3, h4, h5, h6. So many masses at different heights में. If you have only one mass of height h, then mgh is right. ये height change होता जा रहा है. हाँ. कृष्णा क्वेश्चन अंडरस्टूड? आपको ए रॉड है ऑफ मास m है. So for here, should we use that for this thing, that concept you told for that? Oh my, that chain question. What is it called? Center of gravity. Center of mass. Center of mass use का you that? can use. Yes, you can use center of mass का concept. Potential energy में always true center of mass का concept. So if I use center of mass, sir, everything is divided by 2. So mgl by 2. mgl by 2 is answer. Oh. So potential energy is mgl by 2. Why? The total mass is assumed to be concentrated at center. That is called center of mass. आपको आगे आएगा. Center of mass means potential energy में always center of mass you can use. Okay. So total mass is assumed to be concentrated center. And the ground से height कितना है that time? That mass height कितना है? h l by 2, right? L by 2. So formula क्या होगा? U is equal to mgh. H is L by 2. So mgl by 2 is answer. Center of mass is assumed to be concentrated center. Okay. Suppose मान लो center of mass का concept से नहीं करने का, then आपको क्या करेगा? Tell me. आपको क्या करेगा that time? Center of mass से नहीं करेगा, then क्या करेगा? Wait, so Integration how did कहाँ you get L निकालना by है? 2? Integration. How did you get L by 2? देखो total, what is center of mass means? Total mass of the body is assumed to be concentrated center always, right? That means this capital M किधर है? Here, center Yeah. में. Ground से कितना height में? Total length is L. Oh, L by 2. So H is L by 2. So mgh is L by 2. Okay. Suppose मान लो you don't know the center of mass का this thing. Integration कहाँ नहीं जाना पड़ेगा? Integration कैसे करेगा? Tell me. Integration कैसे करेगा? From here से एक certain distance दूर जाके I will cut a small dm element. dl element कट करूंगा and उसका उसका potential energy, small potential energy I will try to find. Then I will integrate from 0 to L, will get the potential energy. Okay. So मैं क्या करूंगा? इधर से y distance दूर जाके
ऑलवेज इंटीग्रेशन करने समय ऑलवेज याद रखो, सम सर्टेन डिस्टेंस जाके एक स्मॉल एलिमेंट कट करूंगा. ओके, आई विल कट ए स्मॉल एलिमेंट. उस एलिमेंट का लेंथ है, स्मॉल लेंथ है dy. dy is the length of this element. आई उसका मास है dm. dm is the mass of that element. I want to calculate small potential energy. इस dy का मास कितना होगा? इस dy का मास कितना होगा? टोटल लेंथ का मास इज m. यूनिट लेंथ का मास इज m by l. Yeah. And dy length का मास इज dm by l. m by l dy, right? These are a small mass. Okay, so dm you got. Now tell me what is the small potential energy? Small potential energy is equal to m g. H is how much? Y, right? Now dm के जगह में I'm substituting. These are all dm, right? So कितना होगा? m by l dy. This is a mass only, small mass into g into y. These are du, small potential energy. Is that the consider? Krisha? Now we have to integrate both sides. From where to where we integrate? From 0 to L तक. 0 to L. Now करो एक बार. Which is constant आ जाएगा. M by L बाहर आ जाएगा. G बाहर आ जाएगा. Integral y dy. From 0 to L. Solve करो ना, कितना आएगा आंसर? M by Oh, yeah. L. So look at m by l into g l square. Y square by 2. Right? 0 to L. 2 by 2 I forgot. Yeah, mg l by 2 will get. So if you subtract L square वगैरह में ये कितना होगा? LL कैंसिल हो जाएगा. So mgl by 2. mgl by 2 is all. तो ये सी को बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर इंटीग्रेशन में भाग गया इधर, ये आपने सिस्टम पढ़ गया उसमें वगैरह में फंसने वाला है. ओके, ये एलिमेंट काटना सीखो ऑलवेज. कोई भी एलिमेंट जाके एक सर्टेन डिस्टेंस, थर्ड वेरिएबल लेने वाला है. थर्ड वेरिएबल लेके विल इंटीग्रेट दैट वेरिएबल को फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन. ओके, अंडरस्टूड. तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी का एंड सेंटर, कभी भी सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट कभी यूज करने का व्हेन एवर डिस्टेंस पावर 1 रहे तो वी कैन यूज द सेंटर ऑफ मास. इट ऑल राइट. फॉर्मूला क्या है? एम जी एच, राइट? पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस पावर 1. व्हेन एवर डायरेक्ट रिलेशन में डिस्टेंस पावर 1 होगा, एट दैट में क्वेश्चंस में वी कैन यूज सेंटर ऑफ मास. अगर इनवर्स रिलेशन आर स्क्वायर एच स्क्वायर है तो वी कांट यूज दैट कॉन्सेप्ट में सेंटर ऑफ मास, रॉन्ग हो जाएगा. ओके, सेंटर ऑफ मास दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी में सेफ. whenever potential energy में potential concept you can use, center of mass का concept you can use. चलो ना करो. A plate of mass m, length b and breadth a is initially lying on a horizontal floor. एक horizontal floor में है. इसका mass है m with the length parallel to the floor and breadth perpendicular to the floor. Okay. Like with the length. Okay. The work done in to erect the breadth is, इसको मैं ऐसा erect किया. I want to find work done. करो देखते हैं. So won't the height be b only? इसका मास है m. I'm मास saying किधर रहेगा? mg. Sir, I'm saying mg b by 2. आंसर रॉन्ग. Sir, Okay. mg minus a. हाँ, तो अंडरस्टैंड करना होगा. देखो, मास इज एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट सेंटर में. सेंटर का हाइट लेना पड़ेगा. एंड व्हाट इज द फार्मूला? टेल मी. Oh, b What- by 2 minus a by 2. So answer is how much? mg into b minus a by 2. हाँ, मरे. Center of sir, I thought center of mass would only. Oh, I forgot the. Oh shit. Here फार्मूला कौन सा यूज करे? टेल मी. Sir, UF minus UI. This is work done by external agent. We are doing work, right? So what change in potential energy is equal to work done by external agent. So therefore work done by external agent is equal to U final minus U initial. So mass is assumed to be constant at this place, and here mass is assumed to be constant at this place. So इसका कितना होगा? Distance is a by 2. इसका MG A distance by is b by 2. So mgh is b by 2 minus mgh is a by 2. So कितना होगा? mg into by 2 into b minus a. That's it? Yes. Oh, समझ आ रहा है? yes, sir. चलो ना करो, देखते हैं. फेमस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सॉल्व करके भी दिया. ओके,
A chain of length L and mass m lies on a surface of a smooth hemisphere. देखो स्मूथ हेमिस्फीयर में से सेंटर मतलब इधर से एक चेन स्मॉल चेन रखा, पूरा चेन नहीं है, थोड़ा चेन है, मतलब दिस लेंथ इज आर इज नॉट इक्वल. ओके, थोड़ा चेन है इधर का. आर इज ग्रेटर देन एल. देखो आर इज ए लेंथ है इसका, आर इज ग्रेटर देन एल विथ वन एंड टाइड टू द टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर. So ओके, इधर what से is टाई कर दिया. L? हाँ, So what is L? एल इज द आर्क लेंथ, इसका मतलब ये चेन का लेंथ है. Length of chain. Okay. हाँ, लेंथ का चेन है, इनको चेन ऑफ लेंथ एल. Okay. With the one end tied to the top of the hemisphere, taking base of the hemisphere as reference line. This is a base as a reference line. मतलब potential is 0 here. Okay. Find the gravitational potential energy of the chain. इस chain का potential energy चाहिए. And you are able to understand that this is not mgh, right? Because a mass is certain height, a mass is certain height, a mass is certain height, a mass is certain height. So that's why we can't use mgh directly, right? करो देखते. So can you zoom in on the picture? जूम इन ऑन द पिक्चर से अब ड्रा करूंगा. देखो एक हेमिस्फीयर है. ओके, इधर चेन है एंड इसका रेडियस है आर है. इसका लेंथ गिवन है एल. टोटल लेंथ ऑफ द चेन इज एल. ओके, नाउ ही इज टेलिंग टू फाइंड potential energy of this chain. That's it. This is a question. Potential energy of this chain. Different potential. Which potential energy is asking? Gravitational potential energy, right? Gravitational potential energy. ये different height में है ना? ये Yeah. वाला. हाँ, मैं करूँ. So we can't use center of mass, right? सेंटर ऑफ मास का उसका फॉर्मूला नहीं मालूम है ना उसका. mgh कौन सा, उस सेमी सर्कुलर आर का. एक्चुअली आगे आपको सेंटर ऑफ मास में आई विल गिव एक लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सेमी सर्किल का पोटेंशियल सेंटर ऑफ मास का क्या होगा सबका. बट इधर तो आपको सेंटर ऑफ मास इसका नहीं मालूम है किधर आएगा मास, राइट? मन ऑन द वीडियो एंड डू. So whenever the potential energies different heights are there, what we have to use? We have to use the concept of integration. स्मॉल एलिमेंट जाने का, स्मॉल एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करने का. देखते हैं, ट्राई करो, सोचेगा तो समझ में आएगा. So there are इंटीग्रेशन भी कैसे करेंगे आई विल टेल यू. हाँ टेल. so for integration, what will we take the limits for d uh, potential Yes. energy is? मतलब देखो आप कैसे कट किया देखेंगे. देखो मैं वर्टिकल से टीटा एंगल जाके, वर्टिकल से टीटा एंगल जाके मैं एक स्मॉल आर कट किया. ठीक, अभी भी the small element should be the same shape of that of parent element. Parent element is arc है ना, मैं आर्क ही कट करना पड़ेगा, स्मॉल आर्क कट करना पड़ेगा. ओके, एंड उसका आई कॉल्ड एज डी थीटा. एंड इसका दिस इज रेडियस, राइट? एंड व्हाट विल बी देयर दिस वन इज आर्क लेंथ इज हाउ मच, टेल मी. याद है? आर डी थीटा इन लेंथ क्या रिलेशन है? याद नहीं? So 2 pi r into d theta by 2 पाई 360. नहीं है, स्मॉल आर्क लेंथ है. वी डन बेसिक मैथ्स में थीटा Oh, डी थीटा. Yes, arc length is L. So theta is equal, d theta is equal to L by R, right? So L is equal to R into d theta. So this arc length I got as R d theta. Arc length I am finding. So मैं okay. Now इसका मास है dm, right? इसका मास will calculate कितना dm मास कितना है. Then only I can use mgh. On ये डिस्टेंस कितना है, y लेंथ लिया, वो मास छोटा सा r कट किया ना, इसका लेंथ इज r थीटा. एंड डिस्टेंस कितना y कैसा आएगा, टेल मी. r का इस तरफ कंपोनेंट इज r cos थीटा, राइट? r cos थीटा इज द y इज r cos थीटा. इधर तक आया? नो, टेल मी स्मॉल इसका मास कितना होगा, टेल मी. उस आर्क लेंथ में मास कितना होगा? l लेंथ में मास m है, 1 यूनिट लेंथ में m बाई l है. एंड कितना लेंथ में चाहिए, r थीटा लेंथ में कितना होगा मास?
m by l r d theta. क्या है समझ में? This is only dm. This is only mdm, right? समझ में इधर तक कृष्णा? हाँ. Now what is the potential energy? Small potential energy is how much? M means dm, g, h. H is nothing but r cos theta, right? Y is nothing but r cos theta, right? हाँ. dm के जगह में सबसे करो. dm is m by l r d theta into g into r cos theta, right? Now we have to integrate to get the total potential energy because heights are varying, right? We are integrating. Okay. Now इधर क्या क्या कांस्टेंट है? u is equal to m by l बाहर आ जाएगा, m by l and r into r square, g बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल cos थीटा d थीटा. नाउ लिमिट्स किधर का? थीटा का डालने का, राइट? थीटा इज देयर, थीटा का लिमिट्स डालने का. मान लो व्हेन द पार्टिकल इज हियर, थीटा इज हाउ मच? थीटा इज हाउ मच व्हेन द पार्टिकल इज हियर, दिस पार्टिकल. सो थीटा इज वेरिंग, राइट? थीटा इज हाउ मच इनिशियली? थीटा इज कितना? 0. इनिशियल थीटा इज 0, राइट? अगर मैं कट करूंगा इधर, सो व्हाट विल बी द थीटा? as the value arc length is decreasing, the theta is decreasing, right? इधर theta कित 0 हो जाएगा. So 0 to, हाँ. Can you tell me what will be theta at this point? Is not completely complete होता pi by 2 लगाता था, but इधर तक only. Can you tell me what is the limits? Tell me ये लिमिट कैसा होगा? इस theta is how much? ये theta कितना होगा? Use the concept of this one. This is theta is how much? Theta is equal to L by R, right? Arc length कितना? L by R is R only. So from here, from 0 to L by R use करने वाला. L by R. Now करो. समझ में आ रहा है मानो? अंडरस्टैंडिंग? Sir, how did I get that r d theta equal to m by l r d theta? दिस वन ना, Yeah. लेंथ L का मास m है, Yeah. यूनिट लेंथ का मास m by L. Yeah. आर्क लेंथ इज हाउ मच? दिस आर्क लेंथ इज स्मॉल कट किया ना, आर्क लेंथ r d theta. We got this one. Yeah. r d theta का मल्टीप्लाई करो m by L into r d Oh, theta. oh, oh, okay. यूनिट मेथड. So cos का इंटीग्रेशन इज माइनस साइन, राइट? साइन. Sir, why is this question so hard, sir? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को डरने का, इसी में फंस जाएगा पीपल को. यू नो जेई मेंस में क्वेश्चंस, इफ यू सी आई अपलोड, उसमें क्वेश्चंस आर देयर, आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा देयर. नॉर्मली ये h ऊपर जाके कितना एनर्जी ऐसा नहीं पूछेगा. हाँ हाँ, करो इंटीग्रेशन करो, कितना होगा? Sir, cos का इंटीग्रेशन इज sir, why is it m by l r d theta? m by l, दिस वन. हाँ Sir, dm, you wrote it as m by l r d theta. Can you explain that again? हाँ, देखो 10 chocolates 20 rupees. One chocolate is how much? 2 rupees. 2 rupees. For 5 chocolates? Sir, that I understood. sir. Okay, 5 chocolates how much? Chocolate, it will be 5 One into chocolate 2 20 by rupees. 2 by 10. नहीं, 1 chocolate का आ गया ना, 10 rupees, right? हाँ, 10, okay. ऐसे ही एक चॉकलेट का वी आर ट्राइंग, एक लेंथ का आई गॉट एज m by l, राइट? कितना ये एलिमेंट कितना लेंथ है? r d थीटा का लेंथ है, r d थीटा इनटू m by l, दैट इज ओनली dm, स्मॉल मास. समझ में आ रहा है? उस लेंथ का मास वी आर कैलकुलेटिंग, वो स्मॉल एलिमेंट का मास वी आर कैलकुलेटिंग. r d थीटा का लेंथ का मास कितना है? दैट इज सिंपली m by l इनटू दिस वन. मतलब एक चॉकलेट का 2 रुपीस आ गए तो आपको कितना भी चॉकलेट करो मल्टीप्लाई करने का, दैट्स इट. Got it. हाँ. Yeah. सो इंटीग्रेट करो, कितना आएगा? एम आर स्क्वायर जी बाई एल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इज साइन थीटा फ्रॉम 0 to L by R. So therefore u is equal to m r square g by L into upper limit minus lower limit. So cos sin कितना? Sin L by R minus sin 0 is 0. So this is answer.
So m r square g by l into sin l by r is the answer. So how did I get m r square? देखो तो r single into to- r r square right, m by l बाहर ले लिया, r into r r square बाहर ले लिया, and g को भी बाहर ले लिया. So what is there? Only cos theta t theta is there in the limitations. So always potential energy वेरिंग है. वेरिंग में क्वेश्चंस पूछेगा आपको, मतलब आपको याद रखो ऑलवेज सेमी सर्किल में वर्टिकल से थीटा लेने का, डी थीटा लेने का, वो ऑलवेज फॉलो करो सेम मेथड से. एंड एक बार ये क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करो, चाहे तो वीडियो देखो, यू विल गेट द सॉल्व करो, समझ में आएगा. कभी भी इंटीग्रेशन से डरने का नहीं है, देन ओनली योर रैंक विल बी बूस्ट अप. इंटीग्रेशन डर गया ना, फंस जाएगा, बहुत काम आएगा आपको, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में भर भर के आएगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हो गया, डन. Yes, sir. नाउ वी वेंट फॉर द इसका हो गया ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डन. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. ओके, स्प्रिंग का आपको समझ में आने का कि वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट स्प्रिंग के बारे में, देन ओनली वी विल स्टडी अबाउट द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. ओके, टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट द स्प्रिंग. Half kx square. Half kx square is the Work done. formula for what? Spring potential energy, right? Yeah. Okay, but first we are trying to calculate work done by the spring. Okay, then we'll calculate the potential energy. Okay, tell me what is the work done, we'll see. Okay, suppose मान लो एक स्प्रिंग है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है 0, इनिशियल पोजीशन में है. ओके, मैं क्या किया, इसको, दिस इज द इनिशियल पोजीशन राइट, इसको मैं खींचा, एक्स डिस्टेंस खींचा, एंड फोर्स इस तरफ है ना. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मालूम है आपको कितना है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हाउ मच? व्हाट इज द फार्मूला? F इक्वल टू कितना? स्प्रिंग फोर्स याद है इक्वेशन? Kx. माइनस के एक्स राइट, बिकॉज मैं डिस्प्लेसमेंट ऐसा खींचा, फोर्स इज लाइक दिस. सो F इक्वल टू माइनस के एक्स इज अ फॉर्मूला फॉर spring force which we learn in Newton's laws of motion also. F equal to minus kx. Now this force is variable force or constant force? मैं इसे खींचता जा रहा हूँ, Variable. x is increasing, the force is also changing right, increasing right, so it is a Yeah. variable force. And variable force का work done we have to use integration का formula right, integration formula. Okay, इसका ग्राफ कैसा रहेगा? which quadrant will get? force versus displacement का ग्राफ कैसा आएगा? So you'll get fourth quadrant. which quadrant? Fourth. फोर्थ से सेकंड ऐसा है ना? Yeah. Yes. Now देखो, I am interested to calculate the work done in order to bring the spring from 0 to x distance खींचने टाइम है, we are doing some work right, वो work done कितना we are trying to calculate first, then we'll go for potential energy of spring का. So we are trying to calculate the work done in order to bring the spring from 0 to x. देखो, small work done is f dx, so integrate both sides to get the total work done. From where to where we are going to do integration? From 0 to x, and f is how much? minus kx and dx. So minus k बाहर आ जाएगा, x का x square by 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या, तो माइनस हाफ x square. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन. वर्क डन बाय द स्प्रिंग टू मूव द फ्रॉम 0 टू x डिस्टेंस तक खींचने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? माइनस हाफ k x square. I am not talking about potential energy. I am not talking about till now potential energy. I want to calculate work done. कितना वर्क डन किया है, that one you have to calculate. Suppose मान लो, any doubt? Krishna, tell me. Work done by the spring. No, sir, I thought we already did this. That's why I said. नहीं, ये work done is not done. Okay, work done is minus half k x square. This is the formula. Now suppose मान लो I want to move the spring from, spring and block है, from x1 to x2. दिस इनिशियल x इक्वल 0 है, बाद में क्या खींचा मैं, थोड़ा स्प्रिंग खींचा, ज्यादा खींचा, x1 डिस्टेंस खींचा राइट. नेक्स्ट में क्या करूंगा, अगेन और भी ज्यादा खींचूंगा, ये x1 है ना, ये x2 है डिस्टेंस, दिस x1 डिस्टेंस. मुझे
x1 पोजीशन थे, x1 से x2 वर्डन चाहिए, देन क्या करेंगे? minus सिंपली half x2 square minus x1 square. सिंपली हम लोग क्या करेंगे? वी विल पुट द लिमिट्स फ्रॉम x1 to x2 instead of 0 to x, we are putting this one. So minus half x2 square minus x1 square. अगर माइनस अंदर भेजे तो हाफ के x1 square minus x2 square, नहीं तो ऐसे लिखो माइनस हाफ के x2 square minus x1 square. This is the work done by the spring from x1 to x2. See, displacement is always initial from mean position se we are taking. X is what? From mean position से distance. Okay, suppose मैं क्या किया, 0 to 5 सेंटीमीटर खींचा स्प्रिंग, बाद में 5 to 10 खींचा, that time what is the work done by the spring means आपको माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट? माइनस अंदर भेजे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर आएगा, राइट? माइनस में रहने दो. सो वर्क डन इज नेगेटिव में, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव, राइट? आया? Yes, sir. ना इसका क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर आप बोलने का कैसे है? चलो कॉपी क्वेश्चन देंगे, करो. चलो ये करो. Sir, A what the block, key back? a block of mass m welded with a slight spring of stiffness k, spring constant k. ओके, ये वेल्डेड कर दिया, स्प्रिंग को अटैच कर दिया मास m. ओके, and k it is equilibrium on the smooth inclined plane with an angle of inclination theta. ये equilibrium position में what is happening when I put a mass and FLU, a mass थोड़ा compress करके equilibrium stage में आ गया. This is the equilibrium position. That means that side force equal this side force, right? Okay. If the variable extension to external force is applied slowly till the spring comes to the relaxed position, find the work done by the spring force. Next step क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? आई एम अप्लाइंग सेकंड केस में, आई एम अप्लाइंग ए ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, सो दैट आई विल बिंग स्लोली 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 टू द रिलैक्स पोजीशन में, मतलब x इक्वल 0 में, राइट? बिफोर बिफोर रिलैक्स पोजीशन में नहीं है, कंप्रेस होके किया ना ऐसा. नाउ आई एम ब्रिंगिंग टू द x इक्वल 0 पोजीशन में. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स? मैं कितना काम किया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स? टेल मी. So what is the work done when in order to bring the position from x1 to x2? What is the work done by spring force? Tell me. Is equal to minus Minus half half k k x2 x2 square square minus square. x1 square, right? x2 square is how much? Finally it came to 0 position, right? Relax position में, mean position में. Okay. So x2 is 0, right? So work done is Yeah. equal to minus half k 0 minus x1 square. नो x1 square करो. x1 कैलकुलेट करने पड़ेगा. How So to we need calculate? to find time, right? Huh? Don't we need to find time for that? No, not for time. देखो x1 मतलब when the spring got compressed to मान लो this is the original position, I got compressed to x distance. So and this became equilibrium. Equilibrium means this side force equal this side force. Yeah. What is the this side force will be? This side force will be? Minus k x1. नहीं, spring force will be opposite direction. FSP is opposite direction. इसमें कितना है? ब्लॉक m में है, एंगल ब्लॉक Oh, में mg sin theta. mg sin theta is equal to kx1. Yeah. x1 खींचा ना, नो सॉल्व करो, ये डाल दो, कितना होगा? Oh, okay, so got it. तो mg sin theta is equal to kx1. x1 is equal to mg sin theta theta by k. by k. कभी भी नॉर्मल स्प्रिंग प्रॉब्लम्स है ना? Yeah, yeah. हाँ, doubt? So should we not consider minus? Like it won't change anything, but then स्प्रिंग फोर्स टेलिंग, yeah. स्प्रिंग फोर्स में कभी भी माइनस मत डालो न्यूमेरिकल्स में, बिकॉज वी आर पुटिंग द डायरेक्शन ऑलरेडी. ओके, नाउ दोनों इक्वेट करो, ये एक्स है, सब करो. सो माइनस हाफ के माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये कितना आएगा इधर? एम जी साइन थीटा बाई के होल स्क्वायर.
सो प्लस हो जाएगा. सो देयरफॉर व्हाट डन इज माइनस हाफ k m square g square sin square theta by k square. This is answer. समझ में आया? Yes, sir. So why is the minus 2? देखो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, राइट? x2 स्क्वायर 0 है ना, माइनस माइनस x1 स्क्वायर इज हाउ मच? दिस वन, राइट? mg Yeah, sin theta by k. Minus will be multiplied outside. हाँ यस, आउटसाइड है ना, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस के. यस, दिस आंसर आया सब लोग. सो वर्क डन वी आर कैलकुलेटिंग टिल नाउ, पोटेंशियल एनर्जी नहीं किया. वर्क डन टू मूव द स्प्रिंग फ्रॉम वन प्लेस टू x1 to x1 x2 इज फॉर्मूला इज माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. सो हम लोग क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे.